Good evening, everyone. Okay, so today we'll discuss some important area where question might be come and some do's and don'ts. Okay, so today we'll discuss some important area means who is long question you should adopt, who is long question you should leave. So let's start from unit one. Listen, constitutional framework. Last question. Last time question come in 2018. So 19 and 2019, 20, 17, 20, 17, 60. So this year might become 1920 no question. But my suggestion to you is that 60 mark don't attempt. Try not to attempt a 60 mark because chances are that you cannot convince the evaluator. Like this, trace the evolution of public administration since Kautilya. Only a history optional student may justice to the question. Otherwise, 20 marker you can attempt. There is no problem in attempting 20 marker. But 60 marker try to refrain and 20 marker same. Public administration were individual centric in pre-British era. This means Mughal time. Individual centric. Indian public administration is neither indigenous in spirit nor exogenous in manifestation. All this question we have discussed. Mansabdari during Mughal period. Some feature of Mughal period, Mughal administration in essence do exist in Indian administration. So, first thing, try to write three other 20 marker that come from unit number 2, 3, 4, 5. If it is very means necessary, you go for this question. And these are the question you can prepare. But again, if you read unit 2, 3, 4, 5 completely, you can leave it. Not a big deal. If you want, you read. If you want to leave, you leave. It is up to you. I will not suggest you to leave or read. It is up to you. But don't write a 60 marker. That is my suggestion from this unit. Don't write a 60 marker. 60 marker is a no. Okay. Yes. Next, this unit yes, you should read this unit. You should read this unit as it help you in Indian polity also. So read this. And another thing, last year we get 260 marker from this. 60 mark, 60 mark. So the chances are very low that you will get a 60 marker again. I cannot deny, looking at OPSC's on predictability, I cannot deny, but here I suggest that long question from this unit like last year, it is very means something philosophical type. Fundamental duty prescribe the parameter within which the entire polity and administrative system are expected to, sorry, it is fundamental right. Linkage between fundamental right and governance. Give it a second preference. Namaskar. Give it a second preference. Is question like this. The founding father of Indian Constitution made solid arrangement for the successful working of parliamentary democracy. Evaluate the functioning of Indian democracy in the past 7 decades. Again, you cannot justice. So 60 marker from this unit, give it a second preference. Give it a second preference. But I strongly think you will get long question from unit number 3 and 4. Strongly, I feel you will get one question, good question. And regarding 20 marker, you can go that yes, either preamble or Constitution of India govern our govern the Indian administration, and all this previous year question we have discussed in class. So I don't think a 20 marker definitely come and you will go for 20 marker.
and this 20 marker is from previous year question. जहाँ भी 20 marker आसीबो previous year question रो आसीबो and class रे आमे सब discussion करिछु. So no question seems difficult for you or you don't know the answer. We have discussed all question in class. So 20 marker आसीबो write this. Preamble ho. Here again preamble, Constitution of India govern Indian administration. Preamble, this is DPSP. This is again preamble, fundamental constitutional value of Indian constitution. And yes, one thing, this question, Indian constitution arrived middle course between British sovereignty of parliament and judicial supremacy. 20 marker attempt, 60 marker again, give it a second preference. Hello. So from this unit long question jodi asibo second preference dio likhi paribo, but second preference. If you get 3 other long question comfortably, so give it a second preference. Preference number 1, preference number 2. We should write those question who is fetch us around 40 plus mark. So try to avoid from this unit. Okay, so this is Indian federalism. Yes, you can do an exercise working from 1947 to 2022. The 4 type of federalism and present context coercive federalism and coercive and combative federalism. All this you can write. Here also you can write this legislative, executive, judicial, financial relation between center state. Yes, you can go for this question if you want. If this is come as a 60 marker. So clear, unit 1 रो 60 mark करिबार नाही, unit 2 रो 60 mark को you give second preference. Now jodi this type of question Indian Federation, yes you go for it, but yes this is 60 marker justified karibaटा टिके 6 page लिखिबाटा टिके difficult. And question number 1 and 2 what I have shown you, it is difficult to justify this answer. गोटे लेखिबा गोटे जस्टिफाई करिबा दुईटा भितर डिफरेंस अछि. खाली लिखि देले हबो नाही. Sometimes we need to convince the evaluator and sometimes these are questions that you cannot convince, so refrain from it. 20 marker, yes you can easily write a 20 marker, good evening, but 60 marker give it a second preference. Hello. And again like paper 1, I hope all you people 5टा question समस्ते पाइथिबो paper 1 रे long question समस्ते 5टा question except question number 4 बाकी समस्ते comfortable थिबो. देखो unit 1 रू 60 mark attend करो नाही, don't attempt 60 mark from unit 1, 20 mark attend करो. एथिरे भी तमे आराम रे 4टा क्वेश्चन पाई जिवो, 5टा न हेले भी 4टा क्वेश्चन. बहुत खराब हेले हां देखो 26 मु कहूची क्वेश्चन मार्क मिलिबो नाही. एंड ए यूनिट रो भी तमे यदि 60 मार्क लिखिबो यू विल नॉट गेट मार्क. नो, बिकॉज़ जस्टिफाई करि परिबो नै. हैला, एंड 26 इज अ पुअर मार्क. तो ए यूनिट रू 20 मार्क करिवो, डोंट अटेम्प्ट 60 मार्क, डू ओनली 20 मार्क. तापरे दिस यूनिट रू 60 marker, if this type of question come don't do, because one question guarantee from local government. No, what is the problem? Question तो ठीक आसीथिला, except दीटा 20 marker आउ गोटे 60 marker छोड़ा बाकी जहाँ जहाँ भी आमे क्लास रे मु कहिथिले सब क्वेश्चन आसीथिला. तो 60 marker देखिबो unit 2 रू हैला, read carefully and if you can justify it you go, otherwise left. A unit रू
लास्ट ईयर रे से चारटा 20 मार्कर पकईथिला ओके वेट आई एम कमिंग टू दिस तापरे 2019 रे दीटा 60 मार्क पकईथिला 2018 रे दीटा 20 मार्क 17 रे 18 मार्क so I think you will get one long question from this unit 160 mark asibo or 60 plus 20 asibo and 60 jodi asila most probable are central secretariat cabinet secretariat PMO these are 60 marker ଆଉ ଯଦି 20 ମାର୍କର କହିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର बोर्ड एंड कमिशन पेपर 1 रे पके देथिला तो प्लानिंग कमिशन नाही एबे फाइनेंस कमिशन यस रोल ऑफ फाइनेंस कमिशन इन फेडरलिज्म मे बी क्वेश्चन कम आई थिंक लिखी पारिबो तमे किछि डिफिकल्ट नाही फाइनेंस कमिशन इलेक्शन कमिशन जदी आसिला यू कैन राइट रोल ऑफ नीति आयोग इन फेडरलिज्म यू कैन राइट दिस आंसर ministry and department don't think advisory body council minister 9 तो एतिकी central secretariat cabinet secretariat prime minister office 60 marker and all this can come as a 20 marker okay and एठी important हैला you need to write second ARC report which report 10th report sorry 13 this is second ARC 13 report and central secretariat asile you will write the problem faced by central secretariat and central secretariat post LPG you need to mention that central secretariat post LPG be it asked or not asked you need to write what is central secretariat role and function of central secretariat some highlight the role of cabinet secretary and central secretariat how it function pre 1991 how it function post 1991 okay so this second ARC 13 report current example so what is central secretariat or current example okay central secretariat or current example kono you can write NPM lateral entry you can write and now central secretariat is more of as a facilitator as a regulator so try to give current example 50 word second ARC 50 word and if you write cabinet secretariat so what is cabinet role of cabinet hela cabinet is headed by senior IS cabinet secretary cabinet secretariat what is the role tapore cabinet secretary is headed by cabinet secretary role and function of cabinet secretary after that how a powerful prime minister has reduced the power authority of cabinet secretary and second ARC on cabinet secretariat and cabinet secretary so you must write cabinet secretariat is relation with PMO principal secretary and when you write prime minister office PMO you write a line secretariat directorate split system line and staff prime minister office prime minister the most important functionary
and he is provide secretariat assistant by a office, Prime Minister office. Role and function of Prime Minister office. After that, the Prime Minister office is headed by a senior IAS, Principal Secretary. Role and function of Principal Secretary. After that, criticism of PMO. Criticism of PMO. Criticism of PMO re centralization of PMO. You write that how nowadays the PMO become more and more centralized, parallel government, the autonomy decision making power of all other ministry has lost, and how the cabinet secretary's authority power has reduced due to this. And give recent example that IFS, senior IFS officer are appointed in the Prime Minister office, because Prime Minister directly monitor the G20 and international diplomatic relation. Although there is Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, but Prime Minister directly monitor it. So this result into centralization, and end with second year's report, 13 report, recommendation for PMO. Okay, so भलसे लिखिबो ए आंसर टा 40 प्लस यू विल गेट, एंड माने मते लागुची गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो, मे बी यू विल गेट टू लॉन्ग क्वेश्चन, वन इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वन इज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट PMO, like last year PMO central administration. Getting it? So this unit ru gote long question karo and pura masla dekhi, so you will get more than 40. So second ARC and post LPG is central secretariat. Okay, so dimension, more dimension, role and function of cabinet secretariat, role and function of cabinet secretary, how his role is reduced due to powerful Prime Minister office and Principal Secretary, and second ARC's role. So this unit you will get one long question, one short question. Asiva. This unit, যদি secretariat direct long question as a secretariat relation with directorate 60 mark, you will go for it. Last year district administration asithila, but it is OPSC's favorite question, so it may again come. Or ebe current context the office of governor become a place of confrontation between central state, or the role of governor in federalism. Maybe ete to OPSC wala dynamic hebe nahi, UPSC re this type question come. So yes, so from this unit you will go for a long question, and last it asithila establish relation between executive directorate way back 2016. Typical pattern of departmentalization. Typical pattern of departmentalization is secretariat in state of Odisha. Don't do this. Hala, eta fosela bhaliya question. In Odisha there is 40 department. So how much you can remember? You cannot remember 10 to 12. Typical pattern of departmentalization. State of Odisha secretariat. So here 20 mark or ठीक होची, 60 mark or 40 department their function. But in emergency, if you can this type of question, you write first what is split system, what is the role of secretariat, what is the role of directorate. First write role of secretariat. So cover 2 page with this. And in Odisha, there are Odisha secretariat, there is 40 department, 40 important department are there, and department are based. You can write about Galik, and you Odisha secretariat na Lok Sabha Bhavan, kahin ki Lok Sabha Bhavan, you can write all these things. If you get a question on Odisha secretariat, don't forget to mention Lok Seva Bhavan
and Mo Sarkar 5T. Don't forget to mention this because this will give you mark. Getting it? Gullick's 4P basis. So this question also you can write. Likhi hobo, typical pattern of departmentalization. We have many things. Secretariat or role, complete role of secretariat or staff, its relation with line also you can add that departmentalization ଅଛି secretariat रे तो तार function कौन better policy formulation, better coordination with line. After line you can write something about line. बाकी सब क्वेश्चन ठीक अच्छे. Chief Secretary is the kingpin. Problem in the structure and functioning of state administration, limitation, what we have discussed in class. These are the limitations faced by state administration. District collector, state secretariat, organization and function of state secretariat, 20 mark, very easy mark, very easy question. So in this unit you will get a 60 marker or 20 marker confirm. So go for it. ओडिशा लिखा ହେଇଛି माने मो सरकार 5T लोक सेवा भवन. Justify why its name is Lok Seva Bhavan and how Odisha Secretariat is promoting decentralization, participative governance by connecting every gram panchayat with BharatNet using IT, increasing efficiency. बहुत जिनस अच्छी लिखि पारिया कथा तमे खाली. And yes, it is our favorite. एबे मु कहि दउची को क्वेश्चन करिवो नाही आसी पारे देबा कथा मो हिसाब रे देबा कथा because you people are going to be video. तो वीडियो तो क्वेश्चन दबा ही कथा से माने काई दो नाहंती I don't know, but they should give. You are not going to become district collector, you are going to become video. They should. Let's see. हैला तो वीडियो क्वेश्चन आसिले सब लिखिबो. जानिछ वीडियो केमती होंती, वीडियो रो ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट, वीडियो रो 18टा डिपार्टमेंट, 18 डिपार्टमेंट हेड. वीडियो इज एडवाइजर टू द पंचायत समिति. पंचायत समिति डेवलपमेंट monitoring work, coordinate between district and panchayat, monitor functioning of gram panchayat. And you can write some limitation that sometimes it was found that over interference of video would result into bureaucratization and inefficiency of PRI. You can write that angle also. देखो whatever information is given, तमे यदि भल से सब कथा रखिछ ना सेइटु आराम रे बाहरिबो. It will flow, answer will flow because you have truckload of information. तो लोकल गवर्नमेंट रे को क्वेश्चन करिवो नाही सेटा मु कहि दउची. You don't write this question. This is write this political and fiscal dimension of 73rd Constitutional Amendment Act at national level and reflection in Odisha. Good question. Municipal Corporation Act succeeded in materializing last year आसीथिला. Political and fiscal dimension देखो same question repeat ହେଇଛି 19 रे 20 रे. Political and fiscal dimension 73rd CA. कि एटा मु रिपीट कर देछि. Functioning of Panchayati Raj, fiscal and functional decentralization, reference to Odisha. सेमती किसी नहीं. ओडिशा रे तमे सेम ऑल इंडिया जहाँ प्रॉब्लम ओडिशा रे सेम प्रॉब्लम. You will write same thing citing that yes this is happen in Odisha. So one question you will definitely get from this unit. Don't write this. Give a brief account on the ongoing major
rural urban development program in Odisha and show its impact. Don't write this. Hela, eta bilkul nahi. This is like a lollipop question, but it will not give you mark. Don't write. Excessive control of state over the local self-government issue, demolition of autonomy of local body. Yes, you can write this. You can cite Balwant Rai Mehta, Ashok Bhai Mehta, GVK Rao. At the time also there was a grass without root concept. Now also excessive control of state. So how state control? Legislative, through legislative means, through administrative means, through financial means. In three means, the relation between state government and PRI is based on legislative, administrative, and financial. So yes, through these three means, the state government try to control it, and that result into demolition of autonomy of local body. Good question. You can go for it. Again, democratic decentralization, major rural development program with special reference to Odisha. टिके देखी देई था नेट रे व्हाट आर द मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ओडिशा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. टिके ए सब क्वेश्चन मोर भरोसा नहीं. मेजर रूरल डेवलपमेंट से दबो मार्क न दबो. But yes, it is, as it is not complete, it is a complete question. But here democratic decentralization. So you can write everything. What is democratic decentralization? The present context. What is the problem? You can go for this question. And last, write 100 or 150 word with this second ARC 6 report. 6 report local government and state 15 report state and district administration. State and district 15 report and 6 report local government. In the wake of globalization, local democracy face new issue and challenge. How ita OPSC pokone examine the major rural development program. Ita au asibo nahi. Ita aguru asutila, but from 2019 this type of question not found. This is a relation between state government and panchayati raj. This question might come. Are a probability achi a question ro. So administrative relation we write administrative, legislative, financial relation. Here you can give current example RBI governor statement, second year's report, everything. So here one question, if possible, one देखिबा पेपर 2 रे तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन करिवार अछि. If you get long question from unit 3 or unit 4, suppose you get PMO, you get relation between secretariat and directorate. Okay, write these two questions. आराम रे करो 40 मार्क मिलिबो because we have sufficient data information. यदि PMO, cabinet secretariat, central secretariat, go for it. If state government रो तुमे देखुचो relation between secretariat direct, go for it. If question 5 रो तुमे देखुचो कि relationship between state government and PRI, go for it. देखो at the time you have to choose. हैला पांचटा जानुथबो को तीनटा धरो जे तीनटा जानुचो तो ऑप्शन ही नहीं. जे पांचटा जानुचो you have to give preference. ABC analysis. Getting it? So unit 5 complete. After that unit 6. Unit 6 19 रे 20 मार्क आसीची, 18 रे 60 मार्क आसीची, 80 मार्क, 17 20, 16 20, 16 40. Yes, from this unit धरो 60 मार्क आमे देखुचो what is steel frame justify continuity, 60 mark. Discuss the significance of public administration with reference to role in developing society in relation to economic growth and social justice. What are the main objective of civil service training? Describe various methods adopted to train civil servants.
देखो दिस इज गुड जेमती कहा जाए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी देखो जज को बेसिस रे करिवो ऑन व्हिच बेसिस यू जज टू थ्री थिंग फर्स्ट यू हैव सफिशिएंट कंटेंट जो थिरे तमे सेकंड एआरसी देई परिबो करंट एग्जांपल देई परिबो आउ व्हिच क्वेश्चन इज नॉट फिलोसॉफिकल अवॉइड फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन लाइक what is steel frame in India justify its continuity you should avoid because here you need to justify something but PMO you straight right this is PMO this is central secretariat justify this word avoid it a straight question main objective of civil service training various method you can go for it because you have current example you have second year C report you know what is training need of training types of training advantage of training limitation of training solution of training देखो फास्ट गोटे क्वेश्चन देखी कि मो पाखरे कंटेंट अछि कि बस तमे 10 सेकंड रे तमे तम माइंड रीड हिजवा कथा कि यस आई हैव कंटेंट टेक सम टाइम टेक 2 3 4 minute I give you 5 minute take 5 minute to decide if you know 6 out of 6 long question 20 marker not a big deal but 60 marker if you know 6 out of 6 5 out of 6 4 out of 6 then you face a dilemma and take some time to choose that in which question I can justify I provide sufficient content like this long question you can go for it but this question no significance of public administration with reference to its role in developing society yes this is you can write what is public administration from paper 1 content and देखो पेपर 1 बहुत हेल्प करिवो ए क्वेश्चन दिस डायरेक्टली यू कैन राइट फ्रॉम योर पेपर 1 नॉलेज so reading paper 1 perfectly will certainly help you in writing answer paper 2 बहुत हेल्प करिवो तुम एग्जाम दियो यू विल फील कि पेपर 2 ପାଇଁ ସେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ पेपर 1 भलसे पढी ଦେଇଛ पेपर 2 ହେଲା yes so chances are that you will get a long question from this unit chances तो long question जदि philosophical थिबो don't write जदि content तुम पाखरे अछि you can go for it 20 marker no problem जहाँ भी आसु 20 marker जहाँ भी आसु UPSC आसु recruitment आसु promotion आसु it is सबु पेपर 1 रो तमे extract करो and recent data देखो as it is Indian administration here they expect you to give current example to second ARC ସେମାନେ ଏଠି expect କରିବେ କି ତମେ ଦିଅ promotion second ARC हाँ comparative थिले avoid करो philosophical content थिले avoid करो what is all India service central service तो आसीबने all India service role and function हाँ डेफिनेटली मिशन कर्मयोगी पर्वतमाला योजना डीओपीटी रो डिसीजन तापर रिक्रुटमेंट आसिले रिक्रुटमेंट रो न्यू रिक्रुटिंग एजेंसी तापर रेलवे सर्विस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस हाँ दिस यूनिट देखो 18 रे आसीची so 19 20 no question in 19 and 2020 so a long back a 60 marker come 11 after that 15 after 15 16 17 18 19 20 5 year last 5 year no long question if you get this question write it है
Go for it. This question, no. Finance Ministry 60 marker, it is not a good question to write. Don't. 20 marker, problem nahi. 60 marker, Parliament control over public expenditure, must write. Finance Ministry control, don't write. This also make a much difference to your exam. देखो समस्ते परीक्षा दौरान समस्ते से जिनस पढ़ुं मार्क कहीं डिफरेंस होची मार्क डिफरेंस होची इट इज अ कंपलसरी नुह ना यूपीएससी रे ना ओपीएससी रे ऑप्शनल इज नॉट कंपलसरी you are not supposed to write all question option are there तो एठी क्वेश्चन सिलेक्शन करिबा बहुत इंपोर्टेंट इफ यू सिलेक्ट प्रॉपर क्वेश्चन मार्क रो सेठी ही वेरी करि जाय आ किछि नै कंटेंट सो आई होप दिस क्वेश्चन मु लास्ट ईयर भी मते लागुतला ए क्वेश्चन टा आसीबो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर आसिला नाही ए वर्ष मते लागुची हां 360 degree I feel this question will come. Let's see. Go for it. This is one question. I am not discussing this. One question. Solve. One question. Two. Diagram. Second ARC. Theorist. एटा लिखिबो हला if 60 marker come you go for it because आमे जो वे रे पढिचु बाकी पिला लिखिबे बट से माने सेमति लिखि परिबे नाही अन्य पिला डायरेक्ट नीति आयोग रो स्टार्ट करिवे नीति आयोग रे सार देबे आमे प्लानिंग कोन लिखिबा वी राइट प्लानिंग वी राइट आइडिया ऑफ थियोरिस्ट वी राइट प्लानिंग कमीशन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन the result of its demise after that second ARC come 2005 second ARC recommend government for decentralized democratic planning so based on that and due to failure of planning commission government come out with niti ayog and niti ayog ro related with behavioral approach system approach hela theorist interpretation you write fuel, you write gullig, you write PPBS budgeting, and the concept of federalism. देखो सत्यव्रत बोर्ड और कमिशन रो डिफरेंस कोन ना तमे कमिशन 20 मार्क बट डोंट गो फॉर 60 मार्क बोर्ड आ कमिशन कमिशन माने मन रखो यूपीएससी हैला कि फाइनेंस कमिशन हैला so commission and how they function what is their role so you can write but 60 marker avoid some question it is better to avoid a 60 marker so if देखो एटा गोटे कंपलसरी क्वेश्चन आसीबो नीति आयोग कंपलसरी हैला आई फील ए 60 मार्कर भल से लिखिबो एटा हैला नीति आयोग क्वेश्चन यू मस्ट राइट एबे धरो प्रॉब्लम कोन होबो तुमको पीएमओ क्वेश्चन आसी जाईची रिलेशन बिटवीन सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टरेट तापरे गोटे पीआरआई क्वेश्चन जानुचो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर नीति आईटी मनीष मरीगला आम पिला माने सेठी सब फ्रस्ट्रेट हो जिवे नहीं मटन रो चारटा आइटम अछि एटा कोन हला मटन रो चारटा आइटम चिकन रो छटा आइटम कोटा खाइबी कोटा छाड़ीबी मो पीएमओ भी पूरा घोषा होईची सेक्रेटेरिएट डायरेक्टर भी घोषा होईची पीआरआई भी जानिची पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी जानिची नीति आयोग भी जानिची आईटी भी जानिची तो एटा हला मुंड व्यथार कारण फॉर यू पीपल हला बेसी मुंड व्यथा करिवो नाही यू गो फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटरी डायरेक्टरेट आ एठी नीति आयोग बाकी जदि के आईटी भलसे प्रिपेयर हेचो आईटी पढो I give you a complete free hand.
है आई विल गिव यू कंप्लीट फ्री हैंड देखो ए जो 6टा लिखिली आई होप यू विल गेट क्वेश्चन एटा पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट डायरेक्टरेट नीति आईटी हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रु पाई जीवो 3टा देखो पीएमओ रे सेकंड ईआरसी रहिबो एठी सेकंड ईआरसी रहिबो एठी सेकंड ईआरसी रहिबो सेकंड ईआरसी सेकंड ईआरसी सेकंड ईआरसी सबुथिरे तो सेकंड ईआरसी रहिलानी सेकंड ईआरसी सबुथिरे आईटी रे भी सेकंड ईआरसी आईटी रिपोर्ट 11 रिपोर्ट नीति आयोग डिसेंट्रलाइज प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रिलेशन बिटवीन सेक्रेटेरिएट डायरेक्टरेट गोटे पीआरआई किछि भी क्वेश्चन पीआरआई गोटे तो आसीबो तापरे पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर नीति आयोग एंड आईटी और हियर आ गोटे क्वेश्चन आसी पारे देखिबा ठीक अछि तो यू आर फ्री टू राइट एनी क्वेश्चन आई एम नॉट माने आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू राइट एनीथिंग बट व्हाटएवर यू डू राइट एज वी डिस्कस हैला आ सत्यव्रत एज यू गॉट टाइम तमे चेष्टा करो कि पेपर 1 रो एठी भरपाई हे जाओ पेपर 1 रे तमे जहा कहउचो टिके कमी जाईची यू ट्राई टू माने राइट दोस आंसर दैट से बाध्य है कि 200 मार्क दबो माने हाईएस्ट 200 थिले तमरो 200 थिबा कथा से हिसाब रे पढ़ो हाँ ह्यूमन राइट देखो अगेन 60 mark from this unit give a second preference not first preference second preference there 20 mark okay you can go hello so welfare administration ru 60 mark give a second preference 20 mark go and last year a 20 mark come 60 mark तो chances maybe they will ask you a 60 marker so if you analyze 60 marker social welfare administration evaluate social welfare one question social welfare administration evaluate the performance of state human rights commission so what we find here we find that yes one type of question social welfare administration social welfare administration social welfare but this question again a bit risky it has to go a long way to get recognition as an independent discipline सेठी किसी डायग्राम नहीं got it so social welfare administration basic you knew the definition and all the agency CSWB SSWB all ministry listen emergency पाई जो I have give you a structure से structure टा खाली मन रखी देता सब मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्ट्री तापर नेशनल कमिशन एससी एसटी ओबीसी वुमेन सेतिकी मने रखी देथाओ हैला इमरजेंसी रे इट विल हेल्प यू टू राइट ए लॉन्ग क्वेश्चन एंड आई हैव टोल्ड यू कॉन्स्टिट्यूशन को दिए पूरे दबो social welfare value laden approach Indian constitution preamble fundamental right DPSP हाँ national commission minority get it so jemiti mu kahitili in whichever I have told you you just prepare this question as a backup plan second preference plan ए यूनिट रो किछि कहिबार नाही एटा तो हमरो 120 मार्क आसीबो
The beauty of this unit, beauty कौन ये unit रा, beauty एटा जे you read it in paper 1, paper 1, paper 1, paper 1, okay. हाँ ଏଇଥିରେ ତ ଚାରଟା already ତମେ ପଢି ସାରିଛ, you already read in paper 1. disaster management last year ଆସିଥିଲା ତ chances are low. last year को क्वेश्चन ଆସିଥିଲା disaster management, लोकपाल लोकायुक्त आउ 20 marker welfare measure in the context of liberalization, privatization, globalization. So this a question ଆସିଥିଲା, a question ଆସିଥିଲା, a two question ଆସିଥିଲା, 3 question. So this year maybe center state relation एटा गोटे 60 marker भी आसी पारे, 20 marker आसी पारे, एटा गोटे confirm दबा हैला 20 marker ticket political and permanent executive. If this question come as 60 marker don't appear, corruption question last year आसीची, लोकपाल लोकायुक्त maybe 20 mark आसी पारे, disaster management chances कम, new economic policy 20 mark, IT and administration 60 mark. So prepare this unit and write question. Don't write if this come as a 60 mark. Don't write. So last year भी एटा करी हबो, लोकपाल लोकायुक्त पेपर 1 रे हमें पूरा भल से we have discussed. Start from Scandinavian country and after that India लोकपाल लोकायुक्त कौन हैला, कौन problem, present status, everything. ओडिशा कथा देइछि, IT Act देखो 20 मार्क आसीतिला, पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव 20 मार्क, इथिक्स एथिरे मार्क आसीबो नाही, इथिक्स इलाबोरेट योर रेस्पॉन्स जोटी दे देला तो असुविधा हे गला ना, एटा इथिक्स क्वेश्चन हे जिवो. सो डोंट अटेम्प्ट दिस. IT based governance is a shift from traditional public administration, classical to behavioral. This is the answer. I think you will get this question 2019 maybe 21 रे आसी पारे. This type of question avoid, debate avoid. Technology and impact of IT 20 mark. हाँ, ethics is a misnomer. It is difficult to find ethics in government. Importance of ethics 20 marker you can do. 60 marker transparency and accountability measure, लोकपाल लोकायुक्त थेला, तापरे CBI, CVC, RTI, IT, everything you can write this. Tribunal you can write, लोकायुक्त write, JCM paper 1, grievance redressal mechanism for employee, you can write this. Neutrality anonymity, लोकायुक्त, neutrality, center state relation बहुत दिन हेला आसीनी, 2015 परे ए क्वेश्चन आसीनी center state relation. This is minimum government, maximum governance. You can write new right philosophy, concept of new right philosophy, e-governance, center state relation, fiscal federalism, corruption, IT. So predictable question. Only don't write two area I have told you not to write. One is if ethics is a 60 marker and if there is debate over environment, this type of thing avoid, otherwise you can go for it. The question कौन आसी पारे यूनिट रो, most likely
मोस्ट लाइकली क्वेश्चन एटा आसी पारे सेंटर स्टेट रिलेशन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिलेशन आईटी लोकपाल लोकायुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर नी इकोनॉमिक पॉलिसी लास्ट टाइम आसीतिला मते लागुनी रिपीट करिवो देखिबा देखो आईटी आईटी न्यूट्रलिटी एनोनिमिटी आउ इथिक्स आईटी न्यूट्रलिटी एनोनिमिटी इथिक्स पुणी आसीगला से जिनस आईटी आईटी 18 रे आईटी 17 रे लोकपाल लोकायुक्त तो आईटी आईटी इथिक्स आईटी इथिक्स लोकपाल लोकायुक्त हाँ एतिक आसी पारे बट पूरा पढ़ी दी था यू विल गेट क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट एठी पढ़ो जीएस रे यू विल गेट क्वेश्चन criminalization of politics administration this question जदि आसीबो तो 20 मार्क यू विल गो फॉर इट जदि आसीबो एटा तो 20 मार्क ही आसे हला किछि नाही सेकंड पेपर हला पेपर 1 टा टिके कांसेप्ट अछि पेपर 2 not like paper 1 not as difficult as paper 1 and second year CS say these are the report which help you in paper paper 2 first RTI कोडी हेल्प होबो यूनिट 10 रे करप्शन इथिक्स यूनिट 10 यूनिट भी लिखि दोछि यूनिट 10 यूनिट 5 this is you can use in unit 3 and unit 4 unit 3 no this is unit 6 this is unit 10 this is unit 3 this is unit 7 this is unit 4 तो यूनिट 3 4 5 6 7 8 कोची सेकेंड ईयर से को रिपोर्ट रे कहितला ठी यूनिट 8 कथा भी लिखिले हो सेकेंड ईयर से कहितला कैपेसिटी बिल्डिंग तो एतिके सेकेंड ईयर से रिपोर्ट you need to remember and you need to write 15 report state 14 report unit 7 13 report unit 3 so 13 3 मन रही जीवो 15 4 14 7 14 divided by 2 7 11 is 10 11 report IT unit 10 रे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन तो 6 समस्त मन अच्छे 10 रिपोर्ट आई थिंक आउ दरकार नहीं मन रखा दरकार नहीं तुम मानकर मन रही जीवनी तुम लेट रे पढ़ा स्टार्ट कलो तो दैट वाज द प्रॉब्लम ओके सो इथिक्स क्वेश्चन आसिले इथिक्स
देखो मुझे आगु एग्जाम आगु भी कही कि मैक्सिमम हो पारे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मे बी दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन मे बी दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन बाहर आसो जोटा कि आम डायरेक्ट क्लास रे तार आंसर डिस्कशन कर नथिबा अपार्ट फ्रॉम दैट आई एनश्योर कि यू विल गेट ऑल क्वेश्चन सेकेंड ईयर सी I think I have give second year से अच्छी PDF second year से WhatsApp group रे भी अच्छी आउ batch note रे भी अच्छी paper 2 रे भी you will get all question हाँ paper 2 रे भी you will get all question मे भी ही पारे गोटे दुईटा इनडायरेक्ट आसी पारे बट तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन छोटा शॉर्ट क्वेश्चन तुम पाइबो जोटा कि पूरा तुम सामना रे रखा हिथिबो प्लेटर आगे नियंतु और खांतु ओके सो जहाँ आज कहली से फोकस कर इम्पोर्टेंट इज व्हिच क्वेश्चन यू हैव टू लीव सेटा छाड़िबो एंड 100 वर्ड सब क्वेश्चन रे तुम भाबिकी चलो 100 वर्ड रु 50 वर्ड तुम लिखिबो सेकेंड ईयर सी 50 वर्ड करेंट एग्जांपल सबुथिरे करेंट एग्जांपल अछि सबुथिरे करेंट एग्जांपल कहा हिची मेक इन माइंड माइंड रे रखो कि हां सब लॉन्ग क्वेश्चन रे एटलीस्ट मु लिखिबी एंड 20 मार्कर रे गिव ए रेफरेंस कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ए रिपोर्ट रे एटा कहितिला दी लाइन रे सार दियो यस 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 यूट्यूब रे भी दे देबी आई विल गिव इट इन यूट्यूब एनी मोर डाउट एनीवन हैव आउ किसी डाउट अछि को हबा कथा तो नुह किसी ओके इफ यू लीव यूनिट 1 जदि तुम यूनिट 1 छाड़ी भी दउछो किसी असुविधा नहीं किसी असुविधा नहीं बाकी यूनिट जदि पढुछो तो इफ यू वांट टू लीव यूनिट 1 you can leave unit 1 if you want to leave you leave आउ यूनिट 6 रु जदि भलो क्वेश्चन आसीबो तेबे करिवो तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यूनिट 9 टा टिके देखि देथा 20 मार्क पाई ओके सो डू दिस एंड एटा भलसे करो जेमति टारगेट 200 मार्क बिलीव मी सुनो समस्ते लास्ट ईयर भी जो माने खाता मगे कि देखी चंती दे आर सैटिस्फाइड कि हां ठीक मार्क दिया हिची देखो तुम लिखिले मार्क आसीबो सेटा मोर गारंटी से बाध्य मार्क देबे न लिखि कि मार्क दउचंदी सब स्टैंडर्ड लिखि कि मार्क दउचंदी तो भलो लिखिले काई मार्क देबेनी डेफिनेटली दे विल गिव यू मार्क सिलेक्ट राइट क्वेश्चन एंड राइट प्रॉपर आंसर ओके आ कहार किछि डाउट अछि जदि कुहा अदरवाइज Sachindra, can you join or not? देखो 200 जाए मु कहि परिबि देखो 200 कोडे तांको ऊपरे दैट इज डिपेंड ऑन देम तमे 40 40 सबुथिरे आनिलो तो 200 220 पई 45 आनिया को पड़िबो लॉन्ग क्वेश्चन मोर निजे 217 थिला हैला वंस अपॉन ए टाइम नो 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 किछि नाही वर्ड लिमिट केही गणिबे नाही नो वन विल गोइंग टू काउंट योर वर्ड्स नो वन बट तमरो ही टाइम लॉस होबो बाकी ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग 9 पेज 10 पेज सेठू टिके बंचो 9 10 पेज लिखियो लिखिबाडू टिके बंचो 6 7 पेज मैक्सिमम 20 मार्क का 2.5 पेज 3 पेज मैक्सिमम डोंट राइट मच बिकॉज से भी गोटे बोर होबो पढ़ी 7 पेज रे सारो लॉन्ग क्वेश्चन हमरो जने 45 पेज लिखि देछि आम क्लास रो मु कहले अरे एते कोन हैला 45 पेज एगला सर डायग्राम दे देछि बहुत डायग्राम कर देछि बोले छाड़ो ठीक अछि he has written 45 it is a record
39 40 जाए मुझे जानी 45 पेपर वन हाँ 45 किए 60 पेज लिखिला कोविड रे कौन है ये तेजस्वी जे कि पॉवेट रे भी 60 पेज मु लिखि पारिबि नै एबे 60 पेज हाँ जे जहार हैंडिकैप कोटा अछि से 40 घंटा बसिबो ही कैन राइट हाँ देखो पेज ऑफ सीट दिस इज पेज हैला दिस इज पेज नंबर 2 दिस इज पेज नंबर 3 आई ऑलवेज से पेज टोटल 60 पेज प्लस 4 ग्राफ 64 पेज रो कॉपी एटा पेज सीट माने एटा सीट तारो गोटे साइड एटा फ्रंट साइड एटा बैक साइड पेज ऑफ सीट भितरे डिफरेंस बुझो ना 45 पेज रे से भी कहला सर 6 पेज मोर डायग्राम रे जाईची पब्लिक पॉलिसी डायग्राम गुड गवर्नेंस डायग्राम नाइन एडिशनल फेडिशनल दियंती नै जे 60 पेज सार दबो से चुपचाप बसिबो पुनी परीक्षा सरले पळे आसीबो अरे गार्बेज हे जीवो ना तमे 60 पेज लिखुछ माने कोन आई थिंक गार्बेज किछि दरकार नै आई डोंट थिंक यू नीड टू राइट 60 पेज मोते किछि माने आई पर्सनली मोते के फील होय नै मार्क बढ़िया आसीबो मु जहा जहा को भी जानि छि पीपल गेट गुड मार्क से 30 31 32 पेज लिखि कि पिला मार्क आनी चंती 60 पेज रो किछि आवश्यकता नाही किछि किछि आवश्यकता नाही किछि 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 दरकार नै यार तमे देखो इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट ऑल कंटेंट इन 2 पेज गोटे इवैल्यूएटर इरिटेट होबो बिलीव मी मु भी पढिले मु इरिटेट हेबी तमे गोटे 2 सेही कथा को लिखुछ फॉर एग्जांपल 2 plus 2 is equal to 4 or 2 into 3 is equal to 6 गोटे एग्जांपल दोछि 2 into 3 is equal to 6 डायरेक्ट इटा आंसर हला तमे कहबो मु आज्ञा 2 टका रखिछि से 2 टका रखिछि तीन जण 2 टका रखिछु 2 को 2 रे मिसेइलु पुनी 6 हला स्ट्रेट लिखो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ लेट देम राइट 60 पेज वी शुड फोकस ऑन 30 35 हैला 30 35 38 ठीक अछि तेजस्वी माने को छाडी दियो ता কথা छाड़ो हाँ जहार हैंडिकैप कोटा अच्छी सी 4 घंटा बसिबो से कौन करिवो जदि आमर कि गोटे स्टूडेंट क्लास रो अच्छी तार जदि कोटा अच्छी 4 घंटा आराम रे लिखिबो सुस्ते सुस्ते कर लिखिबो 4 घंटा 4 आवर अरे गोटे रो रे इन वन रो देयर इज 24 रो अच्छी मिनिमम तो 5 to 6 वर्ड हबो तो गोटे पेज रे कोन हैला गोटे पेज रे तमरो 100 रु 110 वर्ड हेलानी दुई पेज रे तमरो 220 to 240 वर्ड हे जिवो मिनिमम तो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे गला 20 मार्कर पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 एटी एंड ही जिवा कथा ओके अनदर एग्जांपल ठीक अछि आईटी क्वेश्चन 3 पेज हे जिवो आरटीआई क्वेश्चन 3 पेज हे जिवो आरटीआई क्वेश्चन 3 पेज आईटी क्वेश्चन 3 पेज यस एनपीएम एटा भी 3 पेज हे जिवो वी हैव कंटेंट फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन 2 पेज पोजीशन क्लासिफिकेशन 2 पेज एसो 2 पेज रे हे जिवो आंसर वेबर वेबर भी 3 पेज हे जिवो कंटेंट बहुत अछि Oh, seriously, you have written 60 page?
ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଲଗା କାହା କଥା କହୁଛ। You have written 60 page। ହଁ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ इभालुएटर जदि लगिला कि हाँ पिला परिश्रम करुच्ची तो तुमको मार्क दब और जदि इरिटेट है 60 पेज यार बहुत माने कौन लिखिल माने 3 घंटा रे यू राइट 60 पेज इन 3 आवर। He has written he has make it possible। कि please next year you please give me your copy है। give me your copy, I will show you to the other student बाकी मान को टिके देखेबा इंस्पायर हेबे। ठीक अछि किसी ने लिखिछ बट ठीक अछि if you have content you write then okay। No, it is not like that you will get bad mark, you will get good mark also। Okay, so anyone have any doubt or we close this session and we will meet after exam। and listen आउ जहार जहार doubt होबो you will post in our group, WhatsApp group रे post कर दबो, I will give you answer। Okay everyone, good night, take care, all the best for your next exam and we will meet after exam and put your doubt in our WhatsApp group। जहार जहार doubt अछि WhatsApp group रे पके दबो। Another thing, if you have any problem in any unit, so you just go and watch the mock analysis, previous year question ro class ta देखी दियो। previous year question class, any unit you feel problem you go and watch this class। okay, okay, so good night, take care, meet you after the exam।